Western disturbance and climate tropical cyclone. The western disturbance which enter the Indian subcontinent from west and northwest during the winter month. Originate over the Mediterranean Sea and brought into westerly jet stream. चलो बताओ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। आयुष, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आयुष, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहता है जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड located 27 degree to 30 degree. It means subtropical region area in north latitudes. So there is known as subtropical westerly jet stream over India. Tropical cyclone originate over the Bay of Bengal and Indian Ocean. Tropical cyclone it originate over the coastal region area, Bay of Bengal and Indian Ocean. Third point, tropical cyclones occur during the monsoon as well as the month of October, November, and are part of easterly flow. The disturbance affect the coastal region area, basically Coromandel coast and Malabar coast, coastal region, and get the heavy rainfall in the coastal region area. And role of western cyclonic wind affect the Indian climate. So features of cold weather season over the northern plain. Cold weather over the northern plain. So is the northern plain. It inflow the cyclonic disturbance. ये coastal area से cyclonic disturbance से ये प्रभावित हो रहा है over the northern plain region area. From west to north, low pressure system originate.
लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट सब। सो प्रेशर बेल्ट आप जानते ही, कल हम डिस्कस किए भी थे, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, 66 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, 66. So alternate distribution of high pressure and low pressure. तो जनरली देखो कि ओरिजिनेट जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी यहाँ से विंड ब्लो हो रहा और सीधे आके नॉर्थ एंड वेस्टर्न यहाँ पर आपका वो क्रिएट करता है। तो विंड का नेचर क्या है? विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। विंड ऑलवेज द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन एरिया। And disturbance from the west and the northwest, the low pressure system originates over the Mediterranean Sea and the Western Asia, move into India along with the easterly flow. Reason cause क्या है? Much needed winter rain over the plains and snowfall. Plains and snowfall. ठीक है, snowfall in the mountain, the Himalaya region area, in the mountain, the total amount of the winter rainfall, so total amount of the winter rainfall is also known as the Mahavat. It is small, it is very useful for the Rabi crop. Rabi crop. Rabi crop. Okay. Next, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको हम लोग कहते हैं ITCZ। ये क्या है? सबसे पहले इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, ए ब्रॉड टच द लो प्रेशर बेल्ट। ये देखो इक्वेटोरियल, ये लो प्रेशर बेल्ट है। कारण क्या है? तो ड्यू टू, कल भी बताए थे, सन रे और रोटेशन ऑफ अर्थ, इसका मूवमेंट क्या है? वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, रोटेशन हो रहा है। जैसे ही पता है तुमको कि इक्वेटर रीजन एरिया, इक्वेटर the maximum receives solar energy, incoming solar energy, इसको इंसुलेशन कहते हैं। ये इस जगह पर सबसे ज्यादा यहाँ पर वो रिसीव कर रहा है, बोथ लैंड एंड वाटर। तो द ब्रॉड टच ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर located in the equatorial region, located in the equatorial region area। ये एरिया इक्वेटोरियल रीजन एरिया है। जैसे ही यहाँ इक्वेटोरियल रीजन एरिया में लोकेट करता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, देन द एयर राइट कर रहा है अपवार्ड। अब यहाँ से एयर राइट कर रहा है, अपवार्ड जा रहा है, और यहाँ जाने के बाद वो शिफ्ट कर जाता है, सेटल करता है इन ये रीजन एरिया, जिसको हम लोग इस रीजन कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब विंड का मूव क्या है? विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन एरिया। तो वेयर द नॉर्थ ईस्टर्ली एंड साउथ ईस्टर्ली, अब नॉर्थ ईस्टर्ली
अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर आ रहा है, ये देख रहे हो, और सदर्न हेमिस्फीयर से जब चलते हैं सब ट्रॉपिकल से ये इक्वेटोरियल, तो डायरेक्शन विंड के क्या है, तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ट्रेड विंड कहते हैं इसको, ट्रेड विंड, क्योंकि विंड जो ये ट्रेड विंड है, इक्वेटोरियल रीजन एरिया, ये रीजन आपका देखो 0 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ इन द बोथ हेमिस्फीयर, wind always blow from the high pressure to low pressure, and name of the wind name is the trade wind. Trade wind converge, ये दोनों इस तरफ से भी, सदर्न हेमिस्फीयर से भी आके और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से है, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये दोनों आके यहाँ पर कन्वर्ज कर जाता है, मिल जाता है, दोनों वार्म एंड कोल्ड converge, extend approximately where, in the 5 degree north or 5 degree north, name the zone, 5 degree north and 5 degree south को हम लोग कहते हैं, कौन सा जोन कहते हैं, इसको कहते हैं डोल्ड्रम, क्या कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं, डोल्ड्रम, ठीक है, डोल्ड्रम ऑफ द इक्वेटर, डोल्ड्रम ऑफ द इक्वेटर, डोल्ड्रम ऑफ द इक्वेटर, डोल्ड्रम इक्वेटर 0 डिग्री to 5 degree north and 5 degree south of the equator. जैसे ही ये रीजन यहाँ गर्म होता है, हवा जो चूंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, डायरेक्ट सन रे पड़ रहा है, और विंड का ब्लो सब ट्रॉपिकल से इक्वेटोरियल हाई प्रेशर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, तो विंड क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, वहां पर गर्म हो जाएगा, ठीक है, ह्यूमिड एयर कंजर्व इन दिस जोन, इस जोन में जो है ह्यूमिड एयर कंजर्व हो जाता है, कॉजिंग क्या हुआ, द फ्रीक्वेंट हेवी रेनफॉल, चूंकि सदर्न हेमिस्फीयर जो इंडियन ओशन से जैसे ही लॉडेड मॉइस्चर, क्योंकि वार्म हो तो वाटर गर्म हो गया है, तो वहां से वो प्रेशर कर रहा है, तो ये कर रहा है, एज वार्म एयर कंजर्व ऑन दिस जोन इट राइज एंड द कूल फॉर्मिंग द क्लाउड, है ना, इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन, तो वाटर चेंज इनटू वेपर and water vapor change into the water from the cloud, and this convergence zone lies more than the less parallel to the equator, but move from north and south with apparent movement of, किसके कारण, तो ड्यू टू द सन, movement of the sun. Now अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, पहला है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड, नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूवमेंट of determination of the
spectral distribution of the rainfall. Distribution of rainfall. And today discuss about some like a लू है, काल बैसाखी है, हाँ, दूसरा है महावत है, तीसरा आपका ब्रस्ट ऑफ मॉनसून एंड ब्रेकिंग ऑफ मॉनसून। कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टिपिकल वर्ड्स को पहले, सबसे पहले हम लोग करते हैं द ब्रेक, सॉरी, जैसे कि सपोज करो कि ब्रस्ट ऑफ मॉनसून, क्या ये बता सकते हो? ब्रस्ट ऑफ मॉनसून, फर्स्ट, it is also called breaking of monsoon. That it means the sudden approach of the moisture laden wind, a component with the violent thunder and lightning. Violent है, thunder है और lightning है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रस्ट ऑफ मॉनसून। दूसरा है वर्ड है मैंगो सावर, काल बैसाखी, सब याद कर लेना ये सब वर्ड्स। या अक्टूबर हीट, काल बैसाखी, अक्टूबर हीट। कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रस्ट ऑफ मॉनसून? तो कहना कि द ब्रस्ट ऑफ मॉनसून मीन्स द सडन अप्रोच ऑफ द मॉइस्चर laden with the atmospheric कंडीशन दे दो, थंडर है, लाइटनिंग है, एंड थंडर है, लाइटनिंग है and violent. Breaks the normal rainfall, increase sudden and continuous, the constantly for the several days. लगातार जब बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश, रेनी सीजन में देखते हो। दूसरा है कि which wind account for the rainfall along the Malabar coast and Coromandel coast. Malabar coast and Coromandel coast. तो यहां पर देख लो कि ये दोनों तो साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि इक्वेटर के पास है, या इक्वेटर देख लो इस जगह पर, जैसे यहां से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड टच करता है इक्वेटर, तो ये राइट डायरेक्शन में आके फ्लो करता है और टच करता है। दो ब्रांचेस निकल गए, एक अरेबियन बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दूसरा अरेबियन ब्रांच। तो ये रीजन एरिया मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट में आपका हेवी रेनफॉल हो रहा है, मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट में।
तीसरा है, अब हमने कहा था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, हाउ affect the climate of India. The western disturbance, also the weather phenomena brought by the westerly flow in the Mediterranean Sea. ये देखो मेडिटेरियन सी, अफ्रीका के ऊपर का नॉर्थ पोर्शन जो है मेडिटेरियन सी है, मैप में देखोगे, by Mediterranean Sea they occur in the month of the winter and cause the rainfall in north and northwestern part of India. North and northwestern, the Himalaya region and northwestern part of India, but affect the climate of India. कैसे कैसे ये प्रभाव करता है भारतीय रीजन, इंडियन रीजन में? तो बाय कॉजिंग, पहला क्या है, बाय कॉजिंग साइक्लोनिक रेनफॉल इन द मंथ ऑफ विंटर which is otherwise the western disturbance influence the weather of north and northwestern part of India and beneficial, जैसे ही हैवी रेनफॉल होगा, मूसलाधार बारिश होगी, तो बेनिफिशियल क्या कर रहे हैं कि बेनिफिशियल टू द रबी क्रॉप, स्पेशली द व्हीट, बिकॉज ये रीजन तो नॉर्दर्न पार्ट का आपका पंजाब प्लेन एरिया है, and they cause the snowfall where in the high altitude the mountainous region area, mountainous region area. उसके बाद why, one question, why do the western घाट, वेस्टर्न घाट, अब ये देखिए, ये आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, जिसको हम लोग सह्याद्री रेंज भी कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट है, लाइज बिटवीन किसका है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. बट कहता है कि व्हाई डू द वेस्टर्न घाट रिसीव मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न घाट, इसके बनिस्पत में, इसके वजह से यहाँ पर लेस रेनफॉल रिसीव कर रहा है, रीजन क्या है? अब देखो, दो ब्रांचेज बताए थे हम, पहला ब्रांच क्या बताए थे, अरेबियन ब्रांच बताए थे, दूसरा बताए थे बे ऑफ बंगाल ब्रांच. द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट रिसीव रेनफॉल कहां से, ये वेस्टर्न घाट जो है रिसीव कहां से कर रहा है रेनफॉल, अरेबियन ब्रांच से कि सी ब्रांच से? आयुष, वेस्टर्न घाट रिसीव रेनफॉल वेयर, विच ब्रांच, अरेबियन ब्रांच, बोलो, अरेबियन ब्रांच. तो अरेबियन सी से मॉनसून, मॉनसून विंड्स, the winds blow over the warm current and bring amount of moisture present in atmosphere.
बट कहता है द वेस्टर्न घाट डू नॉट अलाउ द विंड टू क्रॉस ओवर द without the shedding their moisture the western slope. अब ये देखिए कि ये आपका सह्याद्री रेंज है, इस ओर से जैसे मॉइस्चर आता है तो सबसे ज्यादा आपको वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट्स में रेनफॉल हो रहा है। ये रीजन एरिया जैसे वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट जो है वो रेन शैडो एरिया हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो आपका कोरोमंडल कोस्ट में रेनफॉल जो है कम हो रहा है ड्यू टू रेन शैडो, है ना। अब इस ओर मान लो कि इस ओर मूसलाधार बारिश हो रही है और इधर कम बारिश हो रही है, क्योंकि इसलिए कि ये सैड कर रहा है, बैरियर के काम कर रहा है, तो यहाँ लोडेड मॉइस्चर आया, इस जगह पर स्ट्राइक किया तो सबसे ज्यादा रेनफॉल यहाँ दे रहा है। इससे अगर पूरा मॉइस्चर को वो क्या कर रहा है कि वो moisture when these wind reach the eastern ghat they are always क्या हो गया, वो ड्राई हो गया, सूखा पड़ गया। तो ड्यू टू साउथ वेस्टर्न मानसून द बे ऑफ बंगाल move parallel to the eastern ghat and this region is located the unfavorable position with the reference to the monsoon wind. Now which force, listen, which force is responsible for the deflection of the wind from its normal path? Ayush Singh and Muskan, which force is responsible for the deflection of wind from its the normal path? The name of the force. Boreal force. And name the sea which is responsible for the western cyclonic disturbance the winter season. Name the sea. बताए थे यहाँ पर देखो कि ये रीजन एरिया आपका है, ये नेम द सी, कौन सा सी है यहाँ पर, अफ्रीका के नॉर्थ में देख रहे हो तो मेडिटेरियन सी इन्फ्लुएंस द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। Next question. In which season does the rainfall in Ganga Valley reduce from the west to east? West to east, Ganga Valley. बताइए। Rainfall in Ganga Valley reduced from east to west during this season is advancing monsoon season. Advancing monsoon season. And ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, देखोगे कि इंडिया हैज द डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, इसको डिस्कस, डाइवर्स जिसको रीजनल वेरिएशन और इन क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया, तो रीजनल वेरिएशन ओवरऑल
unity in the general climatic pattern in India, चाहे वो precipitation recognize, regional variation in the temperature and precipitation. Regional variation, अब regional variation in the temperature condition, क्या इंडिया का जो रीजनल वेरिएशन, चाहे वो समर में और विंटर में, क्या सभी जगह एक जैसा है? इन समर द मर्करी occasionally touch the 50 degree Celsius some part of the Rajasthan in desert, where maybe around the 20 degree in high altitude the Pahalgam in Jammu and Kashmir. वेरिएशन देखो, एक जगह हाई टेम्परेचर है तो कहीं पर लो टेम्परेचर है. टेम्परेचर ऑन द विंटर नाइट, टेम्परेचर एट द द्रास जम्मू एंड कश्मीर may be low at -45 degrees Celsius. Next, variation, wide variation between day and night. टेम्परेचर, चाहे वो थार डेजर्ट एरिया की बात करो, जितना तेजी से गर्म होता है रात में उतना ही तेजी से वो ठंडा हो जाता है. टेम्परेचर में बी राइज इन द 50 डिग्री सेल्सियस एंड ड्रॉप डाउन नियर द, ड्रॉप डाउन कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस एट द सेम नाइट. बट अदर हैंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंसेज द डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो ये रीजनल वेरिएशन टेम्परेचर का है ड्यू टू रिलीफ फीचर एंड लैटिट्यूडनल वेरिएशन. ठीक उसी तरह हम लोग देखते हैं कि प्रिसिपिटेशन, रीजनल वेरिएशन ऑफ द प्रिसिपिटेशन कंडीशन, maximum in which area? Maximum precipitation vary from over the 400 centimeter rainfall in the Malabar coast, Andaman and Nicobar Island, and northeastern Himalaya region area, just south of Khasi region area. But most part of country receive the rainfall the June to July, September. But some part like a Tamil Nadu region area, southern region area, and west coast, and the large portion in the rain during October to November. यहाँ पर जो देख रहे हो, इस जगह पर जो रेनफॉल हो रहा है जिसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं. ओरोग्राफिक, मालाबार कोस्ट के पास orographic rainfall, mostly in the form the snowfall condition, seasonal contrast more than interior part of the country. So rain decreases in the rainfall generally from the west, नहीं generally decrease करता है ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ देखो ये 3 रीजन एरिया, यहाँ पर 3 हिल है, गारो, खासी और जैंतिया. जैसे ही यहाँ से अरब बे ऑफ बंगाल से लोडेड मॉइस्चर लेते हुए वो ऊपर की ओर उठ रहा और यहाँ स्ट्राइक किया ये खासी रीजन में, तो देखोगे सबसे ज्यादा बारिश यहाँ हो रहा है.
फिर ये तो विंड का क्या ब्लो क्या है, लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो अब ये लो प्रेशर की ओर चल रहा है, हाई प्रेशर से या लो प्रेशर की, धीरे धीरे आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार होते हुए अब वो जाते जाते ये सेंट्रल पार्ट में यहाँ पर आकर आपका कम हो जाता है ना, डिक्रीज करता है। सो इट कैन कंक्लूडेड द इंडिया हैज द डाइवर्स climatic conditions. So only the two chapter, one climate and second natural vegetation. Some important points को आपको डिस्कस करना है, जैसे कि कोरियल फोर्स हो गया, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, ईयरली वेरिएशन ऑफ the sea